Hello friends, today in this video session we are going to learn types of grammars. Till now we have learned formal languages, regular language, context-free language, context-sensitive language, unrestricted language, or you can say recursively enumerable language. Each of these languages have their own corresponding grammars. The grammar for regular language is regular grammar, context-free language का grammar है context-free, context-sensitive language का grammar है context-sensitive grammar और recursively enumerable language का grammar है unrestricted grammar. So let us try to look into all these grammars. Before we look at all these specific grammars, we should understand the generalized definition of the grammar. What is grammar? A grammar can be defined by four tuples: V, sigma, S and P, where V is the set of variables. You can also call them as non-terminals. Sigma is set of symbols, or you can also call them as terminals. S is the starting non-terminal. This S must be part of V, and P is the set of productions. Here is the example of grammar. E to E plus T or E to T, T to T star F or T to F, F2 in bracket E or F2 ID. So this is my grammar. What this grammar contains, the variables or non-terminals in this grammar are E, T and F. Normally these non-terminals are denoted by capital letters. Terminals are denoted by small case letters. Which are the terminals in this grammar? The terminals are plus, star, opening parenthesis, closing parenthesis, ID. Which is the starting non-terminal? The starting non-terminal is this E, and all these six productions, there are six productions, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. All these six are called productions. So this whole set is called a grammar. Now let us learn a linear grammar. A grammar is said to be linear if right hand side of all productions contain a single non-terminal. मतलब मेरे प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए. मतलब एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल नहीं हो सकते. And depending on the position of the non-terminal, these linear grammars can be classified into three categories. One is left linear, second is middle linear, and third one is right linear. Let us first of all understand what is left linear grammar. The form of left linear grammar is this: V2 VT star or V2 T star. If every production of your grammar satisfies any of these two conditions, then the grammar is said to be left linear. Now what these conditions are saying, what this condition says, आपके प्रोडक्शन के लेफ्ट मोस्ट साइड में आपके प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए और प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए. That can be followed by 0 or more terminals. यहाँ पर V means variable, that is non-terminal, and T means terminal, and T star means 0 or more terminals. So what this condition says, आपकी प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में एक ही नॉन टर्मिनल होना चाहिए और प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय 0 or more terminals. What this condition says, प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल एंड प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में 0 or more terminals हो सकते हैं. Let us see example of it. The first production S to ABB. प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल है, प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नॉन टर्मिनल है, which is followed by terminals. So S to ABB production satisfies this condition. S to A satisfies this condition. A to AA satisfies this condition. A to null satisfies this condition. And as I said that if every production satisfies any of these two conditions, then grammar is said to be left linear. The totally reverse case is right linear. प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंगल नॉन टर्मिनल ही होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में मेरी जो नॉन टर्मिनल की पोजीशन थी वो राइट मोस्ट होनी चाहिए. रेस्ट इज सेम, मतलब माय नॉन टर्मिनल विल बी प्रीसीडेड बाय 0 और मोर टर्मिनल्स और मेरे नॉन टर्मिनल के बाद में कुछ नहीं होना चाहिए. So this is the example of right linear grammar. You can see that every production satisfies any of these two
कंडीशंस, राइट। यहाँ पर मेरा नॉन टर्मिनल राइट मोस्ट पोजिशन पे है, उसके बाद कुछ नहीं है, एंड इट इज प्रीसीडेड बाय 0 और मोर टर्मिनल्स. Next is middle linear grammar. The form of middle linear grammar is this: V2 T star, V T star, or V2 T star. What it says that my non-terminal can be preceded by terminals, 0 or more terminals, or it can be suffixed by 0 or more terminals. मतलब मेरे नॉन टर्मिनल के आगे 0 और more टर्मिनल्स होंगे, मेरे नॉन टर्मिनल के पीछे भी 0 और more टर्मिनल्स हो सकते हैं. The example of middle linear grammar is this. Here you can see this is my non-terminal. उसके आगे टर्मिनल है और उसके पीछे भी टर्मिनल है. It is satisfying this condition. S to A is satisfying this condition. A to AA also satisfies this condition. You can see here मैंने T star में से null लिया है. So this V is A, and from this T star we can say it is A, and A to null satisfies this condition. So this is middle linear grammar. Now all left linear grammars can be called middle linear grammar because all left linear grammar satisfies these conditions. All right linear grammars can be called middle linear grammar because all right linear grammar satisfies these conditions. But every middle linear grammar cannot be called either left linear or right linear. Now let us jump to the important grammar, which is regular grammar. These regular grammars are also called type 3 grammar. A grammar is said to be regular if it is either left linear or right linear, but not both. And there exists regular grammar for every regular language. We have just seen what is left linear and what is right linear, but then also I have given here example. This grammar is left linear, but I can't call this grammar as left linear. Why? Because such form is not allowed. This production is not satisfying any of these two conditions, right? So this grammar is regular grammar, but I can't call this grammar as regular grammar. Similarly, this grammar is regular grammar because it is right linear, but I can't call this grammar as regular because it is not right linear as well as it is not left linear. Now let us look at the context-free grammar. A grammar is called context-free if all productions are of the form A to alpha, where A belongs to V and alpha belongs to V union sigma whole star. What this form says, मेरे प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए और प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. What is the meaning of V union sigma whole star? Any combination of terminal non-terminal is allowed. Now can I call this grammar as context-free grammar? The answer is yes, because all these productions are satisfying this condition. मेरे प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में there can be any combination of terminal non-terminal. And since all these productions are satisfying this condition, I can call this grammar as context-free grammar. There exists context-free grammar for every context-free language. Context-free grammars are also called type 2 grammars. Now let us see context-sensitive grammar. It is also called type 1 grammar. A grammar is called context-sensitive if all productions are of the following form. And the form is alpha to beta, where alpha must contain at least one non-terminal. Alpha beta both belongs to V union sigma plus. And mode beta must be greater than or equal to mode alpha. Now let me explain you all these three conditions. First of all, what first condition says, alpha must contain at least one non-terminal. मतलब हमारे प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल तो होना चाहिए. और what alpha can be? Alpha belongs to V union sigma plus. It means मेरी प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में there can be any combination of टर्मिनल एंड और नॉन टर्मिनल. मतलब मेरे प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. कंडीशन इतनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए. मतलब मेरे प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्मिनल्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. व्हाट बीटा इज? बीटा इज अगेन बीटा बिलोंग्स टू V union sigma plus. सो मेरे प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में
There can be any combination of terminal, non-terminal, but just beware that V union sigma plus. In case of context free grammar, it was beta belongs to V union, मतलब production की right hand side belongs to V union sigma star, whereas here it is V union sigma plus. What does that mean? In case of context sensitive grammar, मेरे प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में नल नहीं आ सकता. इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर मेरे प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में नल नहीं आ सकता, राइट. एंड द थर्ड कंडीशन इज मोड बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड अल्फा. मोड बीटा मीन्स लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड एंड मोड अल्फा मीन्स लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. What this third condition says, length of right hand side of production should be equal or greater than the length of left hand side of the production. If all productions are satisfying these three conditions, then I can say that the given grammar is context sensitive. Let us look at the example. Concentrate on this example. S to ASB. This is the first production. Let us see whether it is satisfying all the rules or not. Yes, it is satisfying. लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल है. राइट हैंड साइड में देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एक्सेप्ट नल, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है. एंड मोड बीटा, व्हाट इज मोड बीटा इन केस ऑफ दिस? हियर मोड बीटा इज 3 and here mode alpha is 1. So obviously mode beta is greater than or equal to mode alpha. Then as to AAB, it is also satisfying the rule. Then AAA to AAA. अभी तक in case of regular grammar and context free grammar we have not seen such kind of productions कि production की left hand side में terminal भी हो, टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो. अभी तक हमने रेगुलर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में सिर्फ इतना ही देखा है कि प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट. ओके, सो इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, ऑल द कंडीशंस. यहाँ पर मोड बीटा है 3, मोड अल्फा है 3. इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रोडक्शन, मोड बीटा है 3, मोड अल्फा है 2. यहाँ पर अगेन प्रोडक्शन की लेफ्ट मोस्ट साइड है अल्फा, अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू यूनियन सिग्मा प्लस. प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड की लेंथ है 5, लेफ्ट हैंड साइड की भी लेंथ है 5. सो दिस grammar, all the productions of this grammar satisfies the rule for context sensitive grammar. Hence this grammar is context sensitive. But if you look at this grammar, the first production, all right, it satisfies the rule. Second production also satisfies the rule. Third production AA to AA, it also satisfies all these three conditions. But the last production is BBA to B. Can you tell me what is the length of right hand side of the production? It is 1, and length of left hand side of production is 3. Here mode beta is not greater than or equal to mode alpha. Hence this grammar is not context sensitive grammar, right? There exists context sensitive grammar for every context sensitive language. Now if you closely observe this grammar, then as I said that none of the right hand side of any production can contain null. In case of context sensitive grammar, right hand side of any of the production can't contain null. It means these grammars can't generate null, and if these grammars can't generate null, it means these grammars cannot accept or cannot be constructed for those languages which can generate null. To remove this restriction, one exception is allowed, and that exception is this: the rule S to null is allowed if S does not appear on the right side of any rule. मतलब मेरे किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में अगर S नहीं आता है तो मैं S to null ऐड कर सकता हूं, राइट. And in this way we can convert any context free or any regular grammar into the form of context sensitive grammar. And because of this S to null exception, context sensitive grammars are able to accept or able to be constructed for languages which can generate null. Now you might have a question that this type 1 grammars are context sensitive, type 2 grammar which we had seen are context free. So what this context means? So let us understand what this context is.
Consider the production A, capital B, capital A, B, B to A, B, B, C. Now context is always we have to think with respect to non-terminal. If we concentrate on non-terminal A, then everything on the left of non-terminal A is called left context, and everything on the right hand side on the right side of non-terminal A is called right context of A. If we concentrate on non-terminal B, then B की लेफ्ट में जो होगा विल कॉल इट एज लेफ्ट कंटेक्स्ट ऑफ B, और B की राइट में जो होगा विल कॉल इट एज राइट कंटेक्स्ट ऑफ B. Now, what is the meaning of this production? Of course, we will learn context sensitive grammars and unrestricted grammars, and how these grammars produces strings and how we can construct such grammars in upcoming videos. But you try to understand meaning of this production. A, B, A, B, B. What it says, let us try to understand this production with the perspective of non-terminal A. If the left context of non-terminal A, if the left context of non-terminal A is small a capital B, and right context of non-terminal A is small b, then we can replace this by A, B, 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 C. Are you getting my point? If we look at this production with the perspective of non-terminal B, then what it says, if the left context of non-terminal B is A and right context of non-terminal B is capital ABB, then we can replace this production by this. That is why this grammar, the productions involving such type is called context sensitive grammar, because we have to look at the context of non-terminal. इस प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड पे अगर ये है और इसकी राइट साइड पे ये है तो ही मैं इसे इससे रिप्लेस कर सकता हूं. जबकि इफ यू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यहां पर सिर्फ नॉन टर्मिनल ए था, मतलब इसकी लेफ्ट कंटेक्स्ट भी खाली है और इसकी राइट कंटेक्स्ट भी खाली है. So we do not have to worry about the context of the non-terminal. Whenever we see this non-terminal, let's say S, we can replace this S by any of these, either ABB, capital B or small a. Whereas in case of context sensitive grammar, production की left side में और right side में कुछ भी हो सकता है. Depending on that context, then and then we'll be able to replace this whole thing with this. That is why this is called context sensitive grammar. I hope you understood the difference between context free and context sensitive. Now let us understand type 0 grammar, which is unrestricted grammar. An unrestricted grammar is of the form, the productions in unrestricted grammars are of the form alpha to beta, where alpha must contain at least one non-terminal and alpha beta both belongs to V union sigma star. What does that mean? प्रोडक्शन की लेफ्ट साइड में एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए और प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड में देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल इंक्लूडिंग नल. यहां पर वो जो रूल था कंटेक्स्ट सेंसिटिव में, मोड बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड अल्फा, वो नहीं है, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस ग्रामर, this is unrestricted, I can call this grammar as unrestricted, and this is also unrestricted grammar. I can call this grammar as context sensitive also, but this grammar also satisfies the rules for unrestricted grammar, because every context sensitive grammars are unrestricted, right? Let us look at this production. S to ASB, it is satisfying this rule. S to AAB, it is also satisfying this rule. AA to AA, because we do not have to worry about anything, and that is why this type of grammars are called unrestricted grammar. I hope in this video lecture you understood all types of grammars, type 3, type 2, type 1 and type 0. Thank you very much.